A forest is an area with high density of trees. Forests shelter a wide range of flora, fauna, and insects. फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जो कई तरह के एनिमल्स और प्लांट्स का हाउस होता है, कई तरह के डिफरेंट छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म का भी शेल्टर होता है। सो फॉरेस्ट से हमें कई तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो जंगल क्यों जरूरी होते हैं? जंगल हमारे एटमॉस्फेयर के इकोसिस्टम के लिए जरूरी होते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जरूरी होते हैं। एक नेचुरल एटमॉस्फेयर नेचुरल जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसको बनाता है फॉरेस्ट। तो जंगल कई तरह से होते हैं। आज आप देखिए हमारा गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेनफॉल कम होती है, कहीं पर फ्लड होता है, कहीं पर और सूखा पड़ता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग कैसा हुआ? इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कैसे हुआ? डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट की वजह से। These forests are a natural habitat for many species and constitute one of the most diverse ecosystems on the earth. Evolutionary changes in forests were so drastic that many populations, from plants to animals, were unable to adapt to these changes. Evolutionary processes have been influenced by humans in many ways. Humans who evolved and adapted to forest life know how to make best use of it. Until humans learned to hunt, they gathered their food and made their dwellings among the trees of the forests. जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस क्या है, फॉरेस्ट पे हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, हर्ब्स के लिए, कई तरह से हमेशा डिपेंडेंट रहा है। तो ये जो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है वो ह्यूमन की वजह से ही हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। As time passed, a small portion of the forest was cleared for setting up the village. Trees provided building materials. Trunks were cut into planks, while branches and grasses were cut for thatch and used for making huts or roofs. आज के टाइम पे देखिए वर्ल्ड में अगर देखा जाए कम से कम बहुत ही कम क्वांटिटी में फॉरेस्ट बचे हुए हैं। बिकॉज स्मॉल पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट इज आल्सो क्लियर्ड फॉर द विलेजेस, गाँव को बसाने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। Later, humans made bigger changes than these. Humans realized that land could be used to plant those trees which played an important role in their life. लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, आसपास लोगों को समझ में आ रहा है कि जंगल क्यों जरूरी है, प्लांट्स क्यों जरूरी है। तो धीरे धीरे अब ह्यूमंस में अवेयरनेस हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो कम से कम 10 पेड़ हमें लगाना चाहिए। अपनी लाइफ में कभी ना कभी हमें प्लांटेशन करना चाहिए। आप सब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे पे फालतू पैसे खर्च करते हो। तो मेरा मानना है एज माय व्यू, आप क्या करिए, एक प्लांटेशन करिए, एक बड़ा पौधा लगाइए, उसकी केयर करिए, उसको खाद डालिए, उसको पानी दीजिए। जब बड़ा होगा तो आप ही को फल देगा। तो आपको कम से कम अगर हर बर्थडे में आप एक पौधे लगाते हो तो आपके हर बर्थडे में एक पौधा लगते कहीं ना कहीं वो प्लांट्स हमें कितना कुछ देते हैं। उस हिसाब से हमको ये सब करना चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए फॉर द फॉरेस्टेशन, जंगलों को काटने से रोकना चाहिए। अगर हम काटते भी हैं अपने पर्पस से तो अपने आसपास को प्लांटेशन करना चाहिए। लोगों को इसके लिए अवेयर करना चाहिए। Trees were cut and lands were encroached for agriculture. Slash and burn agriculture, also known as drone or shifting cultivation, was also prevalent in early periods. आपने देखा होगा जब खेती होती है वो होता है कल्टीवेशन होता है। तो जब कटाई हो जाती है, कटाई होने के बाद क्या किया जाता है, खेतों को जलाया जाता है फॉर द सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर नेक्स्ट जो क्रॉपिंग करते हैं उसके लिए। तो ये भी जरूरी होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जंगलों में भी फॉरेस्ट फायरिंग हो जाती है, आग लग जाती है, उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। Land was cleared through burning and used for farming or cattle grazing. जंगलों की क्लियरिंग कैसे होती है? तो कटाई करके क्लियरिंग करते हैं, तो जला कर उसको क्लियर करते हैं फार्मिंग के लिए। Ash was mixed with the soil and used as a fertilizer. Farmers moved on to different areas and repeated the same process.
while soil was left to be reclaimed by natural vegetation such as grass for cattle. Due to the continuous requirement of land, the time span for which the land was left unsown has reduced from 15 to 20 years to 8 to 10 years. Overgrazing यानी कि animals का चरना, overgrazing is also a reason of deforestation. Clearing of forest for the purposes of farming, clearing the forest for the purposes of construction, building construction, road construction. तो अपने मतलब के लिए इंसान क्या कर रहा है, जंगलों को साफ करता जा रहा है. More forests are then cleared to meet the demands for construction of housing settlements, roads and rail transportation, infrastructure, airports, seaports, industries, etc. Forests once covered majority of the Earth's land mass, but today, due to human interference, they cover approximately only 30% of the total land area. लेकिन कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे जिस तरह से आप देख सकते हैं 30% ऑफ एरिया जो है प्लांट्स जंगल में पाए जाते हैं. पहले जहाँ ये 50% या 20% थे, अब ये घट के 30% हो गए हैं. Today, the biggest cause of tropical rainforest destruction are human activities. Growing population has put disproportionate. Growing population is also a reason for the deforestation, because the demand of population is demand of population for the construction, home construction, buildings, construction industries, we clearing the forest. The demand for forest products, which has led to deforestation and destruction. The demand for forest products is increasing rapidly than the ability of these forests to supply them on a sustainable basis. This widening gap is one of the main causes of deforestation, forest degradation and loss of forest biodiversity. Deforestation has led to massive soil erosion and eventually created deserts. The place where forests were present is now standing alongside. ऐसे हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे, अब वहाँ बहुत बड़ा डिजर्ट एरिया पाया जाता है, बिकॉज वहाँ पर की जमीन अब क्या हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, वो किसी पर्पस में यूज नहीं कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारा लैंड एरिया है जो खाली पड़ा हुआ है, बंजर हो चुका है, जहाँ पहले जंगल हुआ करते थे. उनको क्यों किया गया, क्या कर दिया गया, फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द ह्यूमन पर्पसेस वी क्लियरिंग द फॉरेस्ट. The desert. This is one of the various effects of human-induced destruction of the forests, which is probably irreversible with time. So here is the question of this: which of the following natural calamities can get the worst in near future due to the rapid deforestation? ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो फ्यूचर को देखते हुए cause due to the rapid deforestation in which forests play a major role? The answer is floods. Forests hold the soil with their roots and the retard the flow of water and with their descent. Forests क्या करते हैं, soil को hold करके रखते हैं for with their roots and retard the flow of water and the wind with their denses. Deforestation can lead to heightened destruction during the natural calamities like a flood, cyclone and landslide, causing mass destruction and death. As in Uttarakhand cloud burst, आपने सुना होगा 2013 में उत्तराखंड में क्या हुआ था, बादल फटा था, काफी जगह फ्लड आया था. In coastal areas, forests help in lowering down the speed of wind during cyclones. Soil erosion. What is the soil erosion? Removal of soil by water, wind or ice is known as soil erosion. Agent of soil erosion: ice. Plant roots firmly hold the soil. Due to this, water prevents soil erosion. Plants क्या करते हैं? Deforestation in the affected area can play an important role in soil conservation. Soil conservation में afforestation मतलब जहाँ पहले जंगल हुआ करता था, जंगलों की कटाई होने के बाद फिर से वहाँ का प्लांटेशन करना is the afforestation. So affected area में afforestation करना एक important रोल प्ले करता है soil conservation में.
you tell what do we need to have healthy crops? आपको पता होगा कि एक अच्छी क्रॉप्स के लिए क्या जरूरी होता है? सॉइल. So soil erosion is the bad is the plays a bad effect is the harm effect in the crops. Of course, without a fertile soil, we won't have healthy crops. Children, do you know which layer of soil is most fertile? Students, here is the picture of soil profile. First layer is the organic layer, second layer is the topsoil, third layer is the subsoil, and fourth layer is the parent material, and last layer is the bedrock. तो इनमें से सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर कौन सी होती है? हमारी टॉपसॉइल की लेयर होती है, जहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक लेयर होता है. इट इज अ वेरी फर्टाइल layers of this profile. That's right. Top layer of soil is nutrient-rich layer. So top layer is soil is the nutrient-rich layer and fertile layer. But wait, do you know what is soil erosion? Soil erosion is a process of removal of the top layer of the soil. Soil erosion एक ऐसी process होती है जिसमें soil layer की top layer remove हो जाती है by the wind, by the water, by the ice. Soil erosion is a process of removal of the top layer of the soil. So what causes soil erosion? Wind, water, and ice are the natural agents. There are three natural agents of soil erosion: wind, water, and ice. Of soil erosion. In fact, humans also play a major role in soil. In fact, human is also playing a major role of soil erosion. Is deforestation. Erosion by cutting down the trees. Overgrazing is also is the reason of soil erosion. Of animals. And overcultivation is also the reason of soil erosion. This is that reason is created by human. Deforestation, overgrazing, and overcultivation. That is the reason of soil erosion. And natural reason is water, wind, and ice. Cultivation. Can we stop soil erosion? Let's see. Plant roots bind the soil in position. जैसे कि आपको पता है प्लांट्स के रूट्स क्या करते हैं? सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है. और फिर जैसे पानी आया, आंधी आई, तो उस टाइम पर सॉइल को बहने नहीं देते हैं. लेकिन जब प्लांट्स सही रहते हैं तो हमारी फर्टाइल सॉइल क्या होती है? वाटर के फ्लो के साथ बह जाती है या हवा के साथ उड़ जाती है. तो प्लांटेशन करना, प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांटेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल in soil conservation of soil erosion and prevent it from being washed away. So children, we should plant more trees, stop overgrazing of animals, and practice terrace farming. So here is some ways to stop the soil erosion: plantation, stop overgrazing, and steer cultivation. यानी कि आप देख सकते हो layers में cultivation करना is also is the best way to stop the soil erosion. Select an option showing the importance of trees. Hint: control flood. Yes, the answer is prevent soil erosion. Prevent soil erosion. Forest plays significant role in our life. So it provides us useful substance such as the timber, honey, etc. Further, it purifies air and maintain water table also. So forests hold the soil firmly, due to which they help in the preventing soil erosion. So recap.
बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड द फूड चेन, प्लांट, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉप. One animal is connected with other animals. And what is the atmosphere? Forest क्या होता है? Importance of forest here. With oxygen, they help in protecting soil. Forests help in bringing good rainfall. Forest They help. are the source of various useful products such as timber, gum, honey, rubber, medicinal herbs, etc. Deforestation of forest leads to soil erosion, loss of biodiversity, and increase in atmospheric carbon content.